TPR. Hi, everybody. Welcome to another episode of the TPR Pod. This episode is with returning guest Sharmeen Khan, a professional psychologist we've had on the show a couple of times before to talk about some mental health challenges faced by Pakistanis over the years, over the crises that we faced, and also Dr. Talha Rehman, who is one of the co-founders of the Ilaj Trust. They are both on the show this week to talk about the relief efforts and give some more context around charity and donation work being done in Pakistan over the years, and especially with respect to the current 2022 climate change flood disaster situation that's ongoing. We talk about a lot of good things, as you'll see in the chapters below, but basically the various stages of relief that come after a disaster like this or something similar to this scale, decisions that people should be making when looking to donate or to support charities, what sort of problems occur, the importance of communication, how technology has helped them, and just their experiences over the more than a decade these guys have been working in this arena. So yeah, I'll keep the intro short and we'll get to the episode immediately. Welcome to pod number 168 with Sharmeen and Talha. I'm good. This is the first time I have two people on maybe the second time I have two people on one screen. So thank you very much for bringing me this opportunity. I thought I would have you guys on, as I mentioned to Sharmeen, and hopefully she's mentioned to Talha, talk about the flood situation and more importantly, what can be done to help the people affected by the flood situation. तो पहले हम ऐसा करते हैं कि एक sort of रेलेवेंसी तारुफ करा लेते हैं कि आप दोनों से क्यों बात हो रही है इस बारे में. Talha, I did not know of. Sharmeen has thankfully introduced us to Talha. I was, I don't know many people who do इस तरह की काम की चीज़ें. So thank you very much to Sharmeen. But we'll start with Sharmeen, who's been on the podcast a couple times to talk about depressing things. हाँ जी. So Sharmeen, what are you doing to help flood people? Why are you here? So I think this time, just background, been doing this since 2005 on and off, but I think this time technology is so great कि घर से बाहर निकलने की खास जरूरत नहीं पड़ी. एक जो नेटवर्क जो पिछले इतने सालों में एस्टैब्लिश हो चुका है, दूसरा जो नादा का एक नेटवर्क है जो which is one of the world's largest registered people network in the world database. Using all of these things, technology is working really well. So, relief चल रही है, service चल रहे हैं of what's happening. Medical camps मैं personally नहीं कर रही क्योंकि बहुत ज़्यादा काम सरकार कर रही है. Yeah. उसके साथ अब तला के ऊपर आते हैं. Yeah. Talha, I met him in 2013 at a bomb blast site. Oh, great. So, ideal situation, to meet new people. What bomb blast site was this? Abasta. अच्छा. Okay. चलें, Talha will pick up for you. सबसे पहले तो आप बताएं, आपने इस पॉडकास्ट की सारी एपिसोड्स देखी हैं. I'm sure you're very our minimum criteria is आते तारीफ हुई थी एक पर्टिकुलर एपिसोड आपने शायद इरफान जुनेजो के साथ किया है. Okay. उसके लिए काफी प्रेज मिला है कि भाई that was really good. Oh shit. Okay. किसने की थी तारीफ? A couple of mine. I was mentioning that I have to be at your podcast today, so Okay. you mentioned. Okay. Yeah. So I was like, okay, that means that there is validation towards this podcast. So I'm excited. Yeah. Famous and stuff. We've definitely not paid anybody. हमारे पास पैसे ही नहीं है. But khair, so Talha, you met Sharmeen at that most typical of places, site of violent incident. What is your background in relief efforts, let's just say? I'm a medical doctor. Graduate करते ही रिजल्ट का वेट कर रहे थे जब अब्बास टाउन कराची में बम ब्लास्ट हुआ, जहाँ पे शर्मीन से मुलाकात हुई. फिर वहाँ से सिलसिले चलते रहे. 2015 में हीट वेव आई कराची में, उसमें एक्टिव हुए. नेपाल में अर्थक्वेक आया, वहाँ गए. फिर मैंने वहाँ गुजारा, काम किया. फिर 2015 बहुत एक्टिव ईयर था, फॉर पाकिस्तान एज वेल. एंड
July there were flash floodings चित्राल में, तो वहाँ पहुंचे for medical relief and rebuilding and recovery. Then there was an earthquake in 2015 in northern areas of Pakistan, जहाँ पे शर्मीन एक टीम लेके गई शांगला की तरफ, और हम गए वापस चित्राल because एक हमारा एक होम ग्राउंड बन गया था and there were people who needed help over there. तो वहाँ जाना हुआ. So in the course of the last 6-7 years, I guess बहुत देखा है लोगों को गुजरते हुए परेशानी से, but at the same time एक जज्बा देखा है वापस खड़े होने का, इंसानियत का जज्बा, more than anything, more than any nationality. जो Right. नेपाल के मैं कहता हूँ ज़्यादा मुझे एहसास हुआ उस चीज़ का कि नेशनैलिटी से बालातर लोग काम कर रहे थे, हर रंग मजहब नस्ल के लोग वहाँ मौजूद थे, लोकल्स भी काम कर रहे थे एंड इंटरनेशनल एनजीओज भी थी, इंडिविजुअल वॉलंटियर्स भी थे, सब एक कोहेजन में चल रहे थे. मैं कोई एक हफ्ता 2 इंडियन बाइकर्स के साथ था. वो एक बड़ी उनकी फेमस बुलेट बाइक, वो लोग अच्छा, कहते हैं हाँ, yeah. they traveled all the way from northern India to Nepal for relief. So I was pillion with them, and we used to go to far-flung areas providing medical aid. So this has been very, Sahi. And this work that both of you have been doing, what's the split between like individual involvement, yeah, with like a organization? Just say, Sharmeen, with you, I started the conversation by talking about like on WhatsApp on your rebuilding the Indus, resettling the Indus thing. But then I believe that's not as directly involved to what we're going to talk about today. So resettling the Indus is working in this floods as well. That is an organization that historically since 2010 we set up around that time. So it's divided into different parts. So I have been more or less dealing with the emergency relief part, then the rehabilitation, just kind of housing, schooling, and infrastructure development. For that we have Haider Ibrahim, who's an architect. So that is more long-term, something that we will be looking into as well. Talha is he also has an organization. So 2015 में we registered Ilaj Trust. Right. You were part of the founding of, because I've heard of Ilaj Trust. I'm a co-trustee at Ilaj Trust. Good. Okay. And उसी के थ्रू, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने जो बाकी काम किए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो चलता रहा. ठीक है. Okay. So the flood situation now, in my mind, I want to talk about what's being done. Because my main source of information around Pakistan and Pakistan ke subjects is the internet, and I feel like even on international media ki to ek aur baat hai, but even on our local perspectives wale sources, flood ki conversation काफी कम हो गई है. And this is something that happens on the internet. So maybe you can just be accepting कि ये तो होता ही है, but given the scale of the flooding and the amount of people displaced, number of people displaced, the area that has been affected, I feel इसमें ignore करने के impacts जो हैं वो are much greater than previous incidents. And flooding का हमारा एक sort of national awareness has been ongoing since the 2010 sort of. I think that was the first big flooding incident that we had. My main memory is Fakhri Alam at PF airport, and uske baad se floods have been coming and going. People have been affected, lekin wo wali attention nahi mili until this point. And so how have you guys? Let's start with how you guys have been involved in this flood and the relief efforts after that, and we can pick up from there. Either of you can begin. If I can start with like just some statistical comparisons, so that's okay. So the 2010 flood impacted 20 million people. जो displaced जिसके अंदर deaths भी आते हैं everything. Right. Across Pakistan. The 2022 floods have impacted more than 33 million people. So the infrastructure breakdown, there's a lot of blame and going around blaming the government and stuff like that.
a scale का natural disaster has not been seen in this region historically before. Yeah. So, that is something very important because infrastructure last time bridges इतने नहीं टूटे थे, सड़कें टूटी थी, मगर यहाँ आपके मेन जो 3 highways हैं जो सिंध के थ्रू जा रहे हैं, they have been impacted. In fact, 2 days ago, I think they actually deliberately blasted the Indus Highway to make space to let the water drain. Right. As far as relief efforts जो आपके सरकारी level पे चल रहे हैं are going, we are still in the middle of an active disaster. Media not reporting it creates donor fatigue, which is happening. A lot of organizations that we are consulting with right now are actually, they're like पैसे नहीं आ रहे. और अभी तो लोगों को खाना खिलाना खत्म नहीं हुआ, मेडिकल कैंप्स खत्म नहीं हुआ, तो रीबिल्डिंग जो 2 साल की एक पूरी प्रोसेस है, वहां तक पहुंचने की शुरुआत भी नहीं हुई. So this is a very important point to note. Would you like to start with what you've been doing? In this plight, actively, I think personally, जैसे पहले काम किया उससे मवाजना करें तो इस दफा तो कुछ भी नहीं कर रहे. जिम्मेदारियां हैं जाती कुछ इस वजह से, और फिर टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है कि कनेक्ट आप आराम से हो सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है. और पूरी नहीं है जाती तौर पे आप वहाँ पे हो. It's more like how you can help through your experiences at the same time, also monetarily whatever you can. Yeah. अगर बात करें मीडिया फ्रेंजी की, ये हमारा एक अलमिया है जो हमने बार बार देखा है डिफरेंट डिजास्टर्स में. 2015 में मुझे अच्छी तरह याद है जब जल्जला आया था नॉर्दर्न पाकिस्तान में, उसी टाइम पे खान साहब की रेहाम खान के साथ शादी हो रही थी. तो जल्जला आया है 7.5 रेक्टर स्केल का, एपिसेंटर अफगानिस्तान था, चित्राल और शांगला और सवात वाले इलाके इफेक्ट हुए. 2 दिन बाद जो है न्यूज़ ब्रेक हो गई कि शादी हो रही है, और Zalzala and the victims went out of the news sites. शादी हुई थी, तलाक हो गई. निकाह हो रहा था 2015 में. The whole thing didn't last very long. और ये डिस्कस होता है. So अब इससे हिसाब लगाएं आप कि we went on with a commitment to take care of around 5,000 households in Chitral with shelter, food, heat. That was more important at that point in time. It was October. And we were in debt because we didn't see what was happening. The only way for the donors to see it was through our social media channels. Otherwise, media was not covering it. And this is happening again. And this is actually, एक अलमिया है कि हमारी एक short-term memory का issue है society. Out of mind हो जाते हैं. I would also like कि उसके अलावा एक और चीज ये भी होती है कि हमारी मीडिया इतनी नेगेटिव है कि हम इसमें फंस जाते हैं कि ये गलत काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है. जो सही काम कर रहे होते हैं ना, बेशक वही बंदा सही काम कर रहा है, will be more stuck in the criticism. For example, and I don't know if you're taking it, the ED Foundation is one of the world's it is the world's largest disaster relief foundation. Yeah. It has won Guinness records. It was there when I was there in all the Afghan wars. It's there for all the ziyarats in Iran, Iraq. It is always present globally. Magar, ever since Abdul Zakari, they died, they don't get money. Because people are more focused on what is going wrong when he was alive, was not alive. After Bilqis Sidi's death, people see it as the end of 2 individuals rather than, trying to support something that is one of Pakistan's largest achievements, in my opinion. I won't say it like, okay? Wow. Because we like getting stuck in the drama. We like criticizing, and because maybe masala zyada hota uske andar, something that we want to discuss. Again, these are my opinions. Yeah, no. This is official. Sharmeen is making official statements Pakistan ke behalf pe. 100%. No, it's fine. I think we'll come to this. I believe देखिए, इंसान की नेचर है कि जब भी वो किसी को तकलीफ में देखेगा ना, या तो वो उसको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, या फिर उसको फर्क पड़ेगा तो वो मदद के आगे आएगा. तो पाकिस्तानी कौम में ये जरूर है कि मदद के लिए आगे आना होता है, इंटेंशन जो भी हो. आखिर में इम्पैक्ट की बात करें और बेनिफिशरी की बात करें, अगर उस तक पहुंच रही है वो एड और रिलीफ जो निकली है एक जगह से, देन आई थिंक सबको अपना अपना काम करना चाहिए. लेकिन एक चीज जो एक नेशनल सतह पे हो सकती है, जो अभी हमारे यहाँ मिसिंग है, वो एक कोऑर्डिनेशन है.
NDMA एक इदारा ज़रूर बना हुआ है जहाँ पे अगर आप वॉलंटरली जाके उनको रिपोर्ट कर दें कि जी मैं ये कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर इलाके में मैं 100 घरानों की अगले 1 हफ्ते तक मैं ख्याल रख लूंगा, अपनी डोनेशन से अगले 1 महीने तक ख्याल रख लूंगा, तब वो उनको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं जाके वॉलंटरली नहीं बताऊं और करना शुरू हो जाऊं तो बहुत डुप्लीकेशन है। हम्म हमारे यहाँ हर डिजास्टर में ज़िया बहुत होता है, Yeah. और वो हम्म ज़िया इतना होता है कि आखिर में बेनिफिशियरी भी कहता है भाई मेरे पास तो घर ही नहीं है, मैं ये या सारा सामान लेके कहाँ जाऊंगा। हाँ. Okay, so that's a good segue to let's start with, because आप लोगों का इतना experience है in multiple disaster and disaster adjacent Can events. I add something here before we go forward? हाँ, sure, we'll come back to this also. But हाँ, हाँ, like I just want to say कि NDMA का सिस्टम बहुत अच्छा है। जो सर तला कह रहा है ना, अगर मैं कहूँगी ये तो when we try to go against the system like the NADA system or the NDMA system, we're actually doing our own selves a disservice. अभी पिछले हफ्ते हमने राशन पहुंचाया है कुछ I think 500 लोगों को or something, एंड जो राशन गया है जस्ट बिकॉज लाइक वो इंटरनल साउथ पंजाब से गए थे, सो दे एक्चुअली रीच प्लेसेस जहां अभी 1 महीने से ज्यादा हो गया सर आपको पहली दफा राशन गया था। दोस पीपल वर स्टार्विंग, यू नो, right. बिकॉज रोड्स पे सारी जो ऑर्गेनाइजेशन जा रही हैं, और अगर एक इलाके में एक ऑर्गेनाइजेशन जा रही है तो जो सरकार वहाँ की है वो कहती है कि चलो यहाँ NGOs हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो आपकी सर्विस इनकम्प्लीट हो रहे हैं और आपकी रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी वजह से इनकम्प्लीट होती है। सो if anyone is working and watching this, just go and register yourself with the local union council at least, so that your efforts are marked by the government as well. It'll help you in taxes later too. Let's start with let's start with the flood as an example. ठीक है, there are villages, usually rural areas में, flatland ज़्यादा होता है because that's where the agriculture is, and then flood का पानी आता है, so that's more affected than obviously areas with varying topography. तो फ्लड आ गया, बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए, villages चले गए, people have nowhere to live, खाना पीना सब खराब हो गया, whatever. I sent Sharmeen a message that it would be good to sort of quantify the changing requirements of displaced people over time. Because पहली बात तो ये, like, there's immediate stuff that you need, like, you need some form of shelter, बेशक temporary, you need खाना पीना दवाइयाँ, whatever. फिर आगे जाके, there are more large scale concrete changes, efforts that need to be put in ताकि उन लोगों के पास कोई फाइनल रहने की जगह आए और व्हाट नॉट। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड देन बट अभी जो बात आ रही है इन मीडिया, इन सोशल मीडिया व्हाटएवर, इज लाइक हाँ पैसे दे दें, राशन पहुंचाना है। दैट सीम्स टू बी द ओनली बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द सिचुएशन। बट can we talk about how what these requirements might be over the life cycle of somebody who's been displaced and how they change? Yes. Do you want to take this? नहीं, go ahead. So, सबसे पहले तो पैसे पहुंचा दें, राशन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर इस दफा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुकी है, हमारे हाईवेज टूट चुके हैं, तो अगर पैसे होते हैं तो जिस इलाके में आप राशन दे रहे हैं उसके करीबी इलाके से हो सकता है। अगर आपने कराची मुझे डोनेशन गुड्स पहुंचाए और यहाँ से रास्ते नहीं है तो वो किसी के फायदे में नहीं आएगा, वो एक चीज है। दूसरी चीज, according to most international organizations, there are certain stages of a disaster. Yeah. Right? तो एक जो acute phase होती है, it's food, shelter, clothing, survival. ठीक है, so उसके अंदर excuse me, keeping in mind your indigenous needs. So yes, there is food, there is clothing. Shelter does not need to be a winterized tent in the middle of summer. It could be a mosquito, because that is segueing into the next part, which is health. So keeping in mind कि floods के बाद कौन सी diseases होती हैं, Talha can, I think elaborate more on this. मगर dengue, malaria जो कुछ हो रहा है, I think अभी जो शहरों में dengue की outbreak हुई है मलेरिया की, उसकी वजह से उसको attention मिल रही है, वरना dengue, malaria, dysentery, these are very natural after such things. Okay, you want to say something? No. So that's the second stage. After that comes, cleaning up. There's always this debris that is left over. What can you salvage from
the villages that have been destroyed, your houses, what all can be used, what needs to be thrown away. Then comes rehabilitation, which is recreating society altogether. ना सिर्फ घर बन रहे होते हैं, मगर साथ साथ और भी इमारतें गिरी होती हैं, आपकी मस्जिदें गिरी होती हैं, स्कूल गिरे होते हैं, अस्पताल गिरे होते हैं. तो वो Yeah. सारी चीजें पूरा एक सोचें कि आपको, अब मैंने गांव देखे हैं 2010 के बाद, जो हमें लेके गए लोगों ने कहा ये हमारा गांव है, और हम सिर्फ मैदान देख रहे हैं as far as I can see, and we're like, where's your गांव? So Yeah. there's a lot of work, but that comes maybe 3 to 4 months after the water goes away, because to construct you need to have dry land. आई थिंक जो आपका सवाल है कि ज़रूरत क्या है, चेंजिंग नीड्स क्या हैं इनकी, आई थिंक बहुत आसान है कि मैं, आप और शर्मीन यहाँ पे एक घर के आराम में बैठ के डिस्कस करें कि सिंध के एक ज़िला बदीन में, एक छोटी तहसील में एक इंसान को क्या ज़रूरत हो सकती है, जब हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि उसकी लाइफ कैसी थी फ्लड Yeah. से पहले, और पहले फ्लड से पहले कैसी थी लाइफ, और उसके आबा अजदाद ने क्या किया है और ज़िंदगी कैसे गुजारी है, given the terrain, the weather, the geopolitical situation, whatever there is, the health conditions, even before the floods. So there is a certain way that they spend their life in, and I think जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डिजास्टर रिस्पॉन्स में, वही होती है स्टेक होल्डर ओनरशिप, एंड योर बिगेस्ट स्टेक होल्डर इज योर बेनिफिशियरी. Right. कि उसको क्या चाहिए, उसको ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की है, वो वही बता सकता है. मैं यहाँ से नेस्ले की बोतलें भेज दूँ, हाँ. 2010 में भी यही हुआ था, बहुत नेस्ले की बोतलें गई थी और वो वैसी की वैसी पैक रही थी, क्योंकि they've never, a lot of people have never seen those bottles. हाँ. They don't like the taste of those bottles because they've always boiled. You've done so many public health interventions around how boiling water is so important that they're accustomed to it now. ये महंगा पानी is something new, so people weren't using it, and even if someone was using it, वो उसको boil कर रहे थे, उस पानी को निकाल के. So I think it comes down to what exactly that person thinks that they need. हाँ. And according to their needs, we have to tailor our response. And जैसे शर्मीन ने बोला, different phases होते हैं. एक बड़ा अच्छा एक graph है. It's a inverted bell curve where it starts with a disaster. It goes up. When it goes up, that's the honeymoon phase, where all international NGOs, local NGOs, Yeah. community, the government is active because they want to be, saving people. And then there comes a decline. That's when everyone goes away and to their normal lives, and this is where these people need the most help. And because this is where your rebuilding phase starts. This is पहले आप rescue करेंगे, फिर recover करेंगे, उसके बाद आप rebuild करके फिर rehab करेंगे. Yeah. Yeah. जो disillusion के बाद जो है, that is the phase. Yeah. हाँ. So वहाँ हर डिजास्टर में होता है कि इसके बाद जो ना लोग भूल जाते हैं कि अब करना क्या है. वजह ये देख, सिंपल बात है, डोनर फटीक बहुत है. $30 अरब का नुकसान है मुल्क को. मुल्क के एक्स रिजर्व्स $8 billion है. Yeah. The Prime Minister right now is talking about how foreign governments can defer loan payments, debt payments, which are due in the next couple of months. So these are the circumstances which have been not faced, I think, this way, with the global recession hitting. But when you see, 2010 में भी अगर आप देखें, 2008 की global recession हुई और 2010 के floods आए. But at the same time, आपने देखना है कि हम एक चीज जो है, मैं पहले भी शर्मीन से बात कर रहा था कि every disaster brings an opportunity to rebuild. Right. And better. As a community, we don't realize this, and we have still struggled to figure this out. कि कच्चे का इलाका जो होता है, जो आप साउथ पंजाब, इंटीरियर सिंध में आप आते हैं, कच्चे का इलाका कहा जाता है. वो कच्चे का इलाका बेसिकली पानी का रास्ता है. Yeah. जब आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं तो यू सी कि वहाँ पे पानी था, एंड यू सी द सॉइल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल. तो उस कच्चे के इलाके में आप घर क्यों बनने देते हैं? Right. हर साल क्यों उनको आप बनने देते हैं, उन घरों को, कि वो पानी के साथ बहेंगे? No. You need to have a proper solution. अब हम देखते हैं, एक बहुत वायरल वीडियो हुई थी कि सवात में जो होटल गिरा था. Yes. वो होटल का है वहाँ पर. Yeah.
ये रास्ते. हाँ, no, this is an interesting also then avenue क्योंकि बहुत से लोगों ने इस बारे में बात की and it's true कि the rainfall was much higher than any estimates or previous beliefs and जाहिर है global warming, climate change की acceleration बहुत ही सब कुछ था. लेकिन there is also like 12 years of on and off flooding happening in Pakistan. पिछले 5 साल से जब भी बारिश होती है कराची डूब जाता है एंड there's always some analysis on ऐसा क्यों हुआ और DHA वालों ने ये सोचा और नहीं सोचा वगैरह वगैरह. But over this, sure, we can't 100% prepare for such a huge amount of rainfall and then subsequent flooding. Magar there have to be clearly identified issues that put people more at risk when something of this nature comes up, right? Those relate to कि आपकी infrastructure किधर बना हुआ है, लोग कहाँ रह रहे हैं, and सवात में तो होटल था. That was just one example. There's so many videos of बिल्कुल दरिया जा रहा है और it's almost like building का दरवाजा दरिया के बाहर है. Like even जब flood नहीं था तो आप उसके अंदर कैसे घुस रहे थे without getting your feet wet, and there seems to be no बिल्डिंग कोड्स और रेगुलेशंस कि भाई मतलब 10 साल से ये हो रहा है, अब आप थोड़ा पीछे बना लें या कहीं और बना लें. सो देयर आई डोंट नो, आई मीन एवरी डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान में मसला क्या है ends up being leadership does मेरी not give a याददाश्त shit. के हिसाब से तो एटलीस्ट 15 साल से तो हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट विल बी द मोस्ट अफेक्टेड हाँ कंट्रीज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. yeah हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी कंट्रीज पर मतलब आई थिंक राइटफुली डाल सकते हैं हम इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली, क्योंकि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन पे तो बहुत जाते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को क्या करना चाहिए. एक चीज जरूर है कि वी रिप्रेजेंट ओनली 1% ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द वर्ल्ड sure and we are the top 5 most affected country. sure The donation is not reciprocating the amount of damage that has been caused because of the West. huh but then I feel like this argument again on social media, because this is primarily a social media podcast, this argument is also being used as like an excuse कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, हमारी I तो bet- इसमें कोई गलती है ही नहीं, and don't even talk to us about what Pakistan should have done. And I feel like it's not that black and white कि bro ये तो सारा अमेरिका ने किया है, सारा वेस्ट ने किया है, हम बेचारे मासूम, हम पे बारिश ये लोग करवा के चले गए. नहीं ऐसा नहीं है. देखिए बारिश करा के नहीं चलेगा, एविडेंस से बात करें ना कि which country has the biggest carbon footprint. America. There should be the you know how there was a League of Nations when it failed, that there was a Yeah. UN that was popped up. Now Yeah. there has to be another body Maybe- specific. There's a climate change body in the UN which is doing nothing. Like, you know- क्यूट प्रोटोकॉल जो Yeah. 90s में साइन हुई थी कि आप अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे वरना फाइन्स लगेंगे. वो फाइन्स कहाँ जा रहे हैं? वो हमारे पास आने चाहिए थे. नहीं वो फाइन्स देखें, आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि फिर आप एक पूल बना लें. इतना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट है वो इतना उस हिसाब से जो है उसके डॉलर इक्विवेलेंट डाल दे कि हाँ. कभी किसी कंट्री को जरूरत हो तो इस्तेमाल हो जाए. टेक्निकली पैसे कलेक्ट हो रहे हैं टेक्निकली. But So अच्छा, that's China and लेकिन America. उसमें खैर, then I yeah just to add something here because ये दोनों points बिल्कुल ठीक है. मतलब कि that's great, right? yeah So 2010 के सैलाब के बाद एक पूरी रिपोर्ट आई थी कि इतनी डैमेज क्यों हुई थी. एंड डैमेज असेसमेंट के अंदर यही आया था जो तला ने कहा है कि दरिया के करीब जो इमारतें बनी थी वो गिरी because like people try to extend their field area as much as they can. yeah Because the closer to the river, the more fertile the land is. yeah However, at a disaster of this scale, where climate change comes in, I'm just like, Sure. don't know. It wasn't just the areas around the river that were impacted. The river right now is more than 100, जी? 100 yeah it's like miles a in width. huge like a almost like a sea. And this is also like a little bit, Tala, we can see in the mirror, just like, Yeah. this is also a little bit, just say, it's historic. You know, every yeah years the river shifts pathways, but with the kind of structures that we have in place right now, it will destroy those structures क्योंकि वो तो मिट्टी का दरिया है, उसको आदत है थोड़ा सा शिफ्ट होने की. सोचे कहाँ मोहनजोदारो में होता था और Yeah. कहाँ आप इधर आ गया, you know, like the Yeah. river shifts time, it's normal. yeah there's this other question then. 2010 wala flood was also not as devastating, but you mentioned 20 million people displaced, which is like A lot. a lot of people.
My one thing that I was wondering was इतने सारे villages, उड़ गए और bridges चले गए और सब कुछ हो गया. Usually, do we see a scenario where ऐसा कुछ होता है and then that village is rebuilt, or do those people just move to cities? So बड़ी इंटरेस्टिंग ये ना ये एक डिजास्टर पॉलिटिक्स कह सकते हैं आप इसको. हाँ. ये एक डायनामिक है जो पाकिस्तान में ऑब्जर्व होती है हर डिजास्टर में. जब आप रूरल से अर्बन माइग्रेशन कराते हैं तो नए हलके बनते हैं, नई कॉन्स्टिट्यूंसी, नई रजिस्ट्रेशन, नए वोटर आते हैं. एंड ये होने जा रहा है 2023 के लिए और ये होगा. देयर इज मास माइग्रेशन आफ्टर एवरी डिजास्टर. देखें, उनका मुल्क है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं. Sure. वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी अब वो शहरों में उठ के आ रहे हैं, तो जॉब क्या होगा, खाना क्या होगा, ये एक प्रिविलेज बात है. जो क्राइम रेट लोग कहते हैं, हाँ, जो कहते हैं ओ दे विल बी बेगिंग ऑन द रोड्स, क्राइम रेट बढ़ जाएगा, ये बहुत प्रिविलेज जगह से आप आ रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं. हाँ. आप सोचिए जिसका पूरी जिंदगी उजड़ गई, उसके नस्लों की जमीनें उजड़ गई वहां पे, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके पास निशान नहीं है अपनी जिंदगी का कि कह सकता है कि 10 बाय 10 के कमरे में एक जिंदगी में रहता था या मेरी फैमिली रहती थी. आप अब उसके पास खाने पीने को भी नहीं है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर इंसान आता है उसी बात पे कि हंटर और गैदरर है. Right. वो अपने बच्चों को पेट भरेगा किसी तरह. Right. सो आई थिंक बहुत आसान है ब्लेम शिफ्ट करना. एट द सेम टाइम हिस्टोरिकली तो ये हुआ है, मास माइग्रेशन होती है, उसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू रहा है कि हमारे पास सेकंड टियर सिटीज भी अभी तक जो है इतनी उस तरह से ऊपर नहीं आई है. देयर इज ओनली अ सिंगल टियर सिटी नेटवर्क, दैट इज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. You can add Peshawar and Quetta in it too. It's a second tier city. Yes. Multan, Bahawalpur, Raimia Khan can be, Sialkot can be, Faisalabad can be called second tier city. But in Pakistan specifically, there aren't any cities apart from Karachi. Right. So you can't call it a city. It's still a semi-urban. I appreciate all the comments that will come on the internet from Hyderabad stands कि आपने कैसे कह दिया. This is a great thing. But हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मैं तो हैदराबाद के लिए दर्द रख के कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, फैसिलिटीज देखें. No, it's fair. It's fair. हैदराबाद से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके खान की इमरजेंसी में क्यों आ रहे हैं मरीज? Yeah. No, it's fair. It's fair. Internet reactions notwithstanding. जब हैदराबाद में आज भी बारिश होती है ना, बारिश को 6 महीने गुजर जाता है, उनका ग्राउंड वाटर इतना हाई है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो फ्लड होकर फ्लडेड ही रहती हैं, तो उनके मस्कीटो प्रॉब्लम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इश्यूज. Sure. I'm also very happy that you're here because the perspective is very different. So while he spoke about migration to the cities, I would like to speak about the same thing that he said, but from the village. This thing, अगर एक पूरा गांव तबाह हो रहा है और आपकी आबा अजदाद की जमीनें हैं, तो उसके बाद जो बिल्ड बैक बेटर का कॉन्सेप्ट है, in the past working with resettling units, we have actually done that. We have taken indigenous building methods and actually worked in conjunction with architects to modernize them and make those structures safer. तो इस साल या 2010 के बाद जो subsequent floods आए, those houses may have been damaged, like इस तरह के सलामत आप कुछ खास कर नहीं सकते, but they have not fallen. इस साल सिंध के जो पानी आया, जो हमारे सिंध में घर बनने में है, क्योंकि ग्राउंड वाटर इतनी हाई हुई है, तो नीचे से पानी आकर then eventually your house just melts away. अगर the damage is lesser, the cost of lives is almost zero because of the building techniques, and we have actually been able to add certain interventions to villages such as plumbing. Did not exist before, and because of the infrastructure in place of how the houses were placed and stuff like that, काफी ऐसे इलाकों में गैस और बिजली जो पहले नहीं होती थी, वहाँ के लोकल politicians ने कहा कि अब के आपके पास infrastructure है, we can actually supply you with these things. Right. So there has been a lot of growth in terms of rebuilding as well. Just give playing that devil's advocate too. नहीं, but also there is, I mean, ये सारी बातें जो होती हैं कि शहर में आ जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन पड़ेगा और क्राइम बढ़ जाएगा. I mean, there is also, जाहिर है, there is a urban judgmental aspect to ये पोर्स कहाँ से आ गए हमारे पास, हमारे मोहल्ले को ख़राब करने. But also वो जो आ रहे हैं,
They might, like Karachi में कौन सा infrastructure हमारा वैसे अच्छा है, उनकी कौन सी जिंदगी अच्छी होगी, but it's not like they have a village to even go back to, right? It's not like they're making this choice because they always wanted to move to Karachi. So the question what I was thinking was more about, अब ये जो villages destroy हो जाते हैं, is there hope that X percentage of those will be because all of this costs money, right? And if we're already talking about donor fatigue, and if we're already talking about intentions of those in charge not always being ideal, so are we just losing villages and cultures and rural communities जो कि फिर मजबूरन are going to cities to live shitty lives, or तो will बनेगा, those be वापस बनेगा rebuilt? तो आप बनेगा, सारे दिन लोगों की बात कर रहे हैं. yeah. बनेगा तो. और वो देखिए, एक बात आई थिंक है कि जो हारी है ना, जो फार्मर है, उसको जमीन Yeah. और उसकी जमीन जरखेज है, और वो उसको नहीं छोड़ सकता. वो किसी ना किसी तरह से वो झुग्गी डाल के वापस चला जाएगा, Okay. लेकिन वो जाएगा जरूर. Okay. एक परसेंटेज होगी जो अर्बन एरियाज में रह जाएगी. एंड आई हैव नो इश्यूज, लाइक पर्सनली आई से कि भाई मतलब आपका मुल्क है, आप फ्रीली कहीं पे भी जाके रह सकते हैं. हाँ. वो आपकी मर्जी है. लेकिन जब आप देखते हैं ना कि बसें भर के आए हैं, तो आप समझ जाएंगे कुछ हो रहा है. Right, of course. हाँ, गेम्स तो हमारी यहाँ, मतलब इवन जब वो फ्लड में होता है तो there's always these stories के पानी एक फील्ड से दूसरे फील्ड में डाल दिया, और that sort of stuff is सर, happening. ये न्यूज नहीं बनी, लेकिन ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि लोगों को कुरान पे हाथ रख के सिंध में एड दी गई है कि वोट 2023 में हमें मिलेगा. Yeah. I mean, historically, हमारे, I mean, it's the same people. And a lot of villages have been destroyed ताकि crops are not destroyed. You're absolutely right. ये सारी चीजें होती हैं. It comes from the same theory of the pond area के अंदर आपने कपास नहीं क्या crops लगाए क्यों हैं? Yeah. So pond area is the area, the mitti that is outside the river. That's not supposed to be for crops. So that puts lower ground पे आ जाती हैं आपकी जो population settlements होते हैं. Right. So हाँ, मगर it is possible, it will happen. 3.5 करोड़ लोग ऐसे तो अपनी जमीनें नहीं छोड़ेंगे, वो और कहीं रह नहीं सकते. मैं एक मिसाल देती हूँ. थर पार्कर में मैं एक साहब से मिली थी, एंड थर पार्कर इज सैंड ड्यून्स, तो वहां जाकर मेरे से चलना नहीं जा रहा था. Like I was falling all over the place, very clumsy at walking, and he was laughing at me. And he's like, जिस तरह आपसे इस मिट्टी में नहीं चला जाता. He taught me techniques of how to walk on sand for long periods. Right. And he said, आपसे यहाँ नहीं चला जाता, हमसे concrete पे नहीं चला जाता. Right. Karachi, I can't walk, I fall on the concrete. So their wisdom is different, their style of living is different. They will come, they will see the city. जो हमारी एक मेंटालिटी है कि कोई भी जो गांव से आएगा कहेगा वाह क्या शहर है, वो वाकई में है, क्योंकि उनकी शायद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट है, उनकी सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ के इंडिकेटर्स डिफरेंट है. Their values are different. Some point I want to go back. Yeah. अच्छा, खैर बहुत मसले हैं. A big solution for these masle is relief and support efforts which are funded by donations. इससे पहले हम बात कर रहे थे about attention in the media and donor fatigue वगैरह. As people who have both worked in sort of donation assisted fields, what tools do you guys have to ensure that जो donors हैं, you guys are at least doing what is in your capabilities to ensure that the focus is not lost? अगर mainstream, like हम TV, Geo News वगैरह पे floods की stories आना बंद हो गई, how do you make sure that people are still aware कि नहीं bro, मतलब मसला हल नहीं हुआ, we still need these donations to keep coming in? By doing podcasts? Yeah, oh great. Primarily social media channels. हमने specifically हमारा जो लास्ट ट्रस्ट के साथ एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऑफ कर दी रिपोर्टिंग, और जब हम बेसिकली आप समझें सिटीजन जर्नलिज्म कह लें, रिकैप ऑफ नीड असेसमेंट कह लें, शॉर्ट वीडियोस, पिक्चर्स, उसके थ्रू डोनर्स को रीच किया हमने इन द पास्ट, एंड आई थिंक अभी भी ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह कर रही हैं. वो एक तरीका है. लेकिन वही वाली बात है, देखें इस कौम से आप डैम बनाने के भी पैसे मांगते हैं, फिर इस कौम से आप 2005 के जलजिले के भी मांगते हैं, 2010 के लिए मांगते हैं, 2022 के लिए मांगते हैं, 2011 के लिए मांगते हैं, 2014 के लिए मांगते हैं.
तो डोनर फटीग आज की नहीं है, 1 महीने की नहीं है, इस Yeah. फ्लड की, ये तो कब से चल रही है। Yeah. जो आपका एक्सपर्ट बाहर बैठा है उसको गिल्ट होता है कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है तो मैं अपने कन्वर्जन रेट से कुछ कर दूं, लेकिन Yeah. फिर उसकी बस हो जाती है कि मैं कितना कर सकता हूँ। और हाँ. अभी 4 महीने पहले रमजान आया था और रमजान में जितना हमने गिल्ट इंड्यूस्ड डोनेशन ड्राइव करनी शुरू की हैं कि Yeah. रमजान इतना पैसा हमारे डोनेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है कि उसके बाद एक स्पेशली इन द फॉलोइंग कपल ऑफ मंथ्स थोड़ी सी फटीग नेचुरली आ जाए। Right. Right. Of course. Of course. But yeah, because I'm just thinking, one of the big points of this podcast was my complete disdain for Pakistani news conversations. Not that we talk about Pakistani politics and that sort of stuff a lot on the show, but there was a clear asas कि अगर हमें ये podcast करना है तो decidedly we do not want to be like mainstream Pakistani media, which seems to be extremely sansanikhez, scandal focused, masala, investigative, and it's very hard to find any constructive, even मतलब मजे का तभी content. आपकी व्यूअरशिप ना लिमिटेड है। या वो तो बहुत बता नहीं गहरा रहा। एहसास है मुझे. So and then that's why I feel like you guys needed to be on, because even the content creators जो के funds जमा कर रहे थे, even they're starting to quiet down, unless आपके पास कोई ऐसा मौका आ जाए कि भाई हम टीवी वाले कनाडा चले गए और एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई हुई, इस तरह के sort of post नॉन contributing sort of देखें हमने कितनी अच्छी बात की टाइप पोस्ट बड़ी हो रही हैं. But खैर, there was a lot of mention initially, and also Sharmeen, you told me on WhatsApp that technology has been a great tool where you guys are able to do a lot more coordination and sort of constructive input without actually necessarily having to go into the affected areas like you perhaps had to before. तो उस बारे में ज़रा बताएं, टेक्नोलॉजी ने कैसे आपकी efforts बेहतर किए हैं? Okay, so I speak for myself, but to some extent Talha as well. We've been working as consultants in this part, so with a lot of different organizations. For example, Talha being a medical doctor and having experience with how to get rid of waterborne, prevent against waterborne diseases, or create potable water, has been supplying that to multiple organizations. I've been working with consulting with multiple organizations for needs assessment, how to get donors to send money to the right organizations. What areas need more help. So geographically, coordinating with a lot of different organizations, then coordinating with the NDMA, and I asked them some stuff. मतलब एक सिंपल एग्जांपल है कि पहले हमें ऐसे करना होता था कि हमें जब कोई डिजास्टर आया ना, तो हम ऑन ग्राउंड जाते थे, कुछ शहर से वॉलंटियर लेके कुछ वहां से पकड़ते थे और एक नीड असेसमेंट करते थे कि भाई किस चीज की है, क्योंकि हिस्टोरिकली आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट जब भी हमारी गवर्नमेंट की ऑथराइज नोटराइज लिस्ट बनती हैं उसमें आपको बहुत लूप होल्स मिलते हैं और बहुत आपको डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं. तो हमने हमेशा खुद इस टाइप की के इलाका चेयरमैन के जलजिले में 10 घर गिर गए. अच्छा. तो हर घर पे 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से. राइट. तो इलाका चेयरमैन की नस्लों के पास 10 घर नहीं थे. राइट. वो इलाके वाले ही बता रहे हैं. राइट. सो स्टफ लाइक दिस. तो ये सब हमें करना पड़ता था. जैसे एग्जांपल तो 2015 में चित्राल में 10 दिन पहले हमने सिर्फ नीड असेसमेंट की. हाँ. डोर टू डोर जाके बर्फ के अंदर पहाड़ी इलाके में कि जी आपको किस चीज की जरूरत है, आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ क्या हुआ है, कोई जानी नुकसान है, कोई माली नुकसान है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. और फिर जब आप मोहल्लों में जाते हैं, चीजों में गलियों में जाते हैं, तब आपको वहां पे और बच्चे मिल जाते हैं. वो कहते हैं हम आपको बताते हैं कि इधर भी हुआ हुआ है, आए हम आपको दिखाते हैं. हमारी गली के उस कोने वाले घर में भी हुआ हुआ है, और उधर पहाड़ चोटी पे उधर एक घर था, वहां पे वो एक फैमिली रहती है, वहां पे भी हुआ हुआ है. तो आपको इस तरह की बातें पता चलती. टेक्नोलॉजी से फायदा ये हुआ है कि अब आप जो है एक नीड असेसमेंट परफॉर्मा बना के ना, जो आपने ऑलरेडी लोगों को साथ काम किया हुआ है इतने सालों से ऑन ग्राउंड, आप उनको भेज दें कि यार ये मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे.
उस हिसाब से मैं अपनी रिलीफ और रिकवरी प्लान करूँगा। एंड बिकॉज ऑलरेडी वहाँ के लोकल्स होते हैं तो फिर वो क्योंकि अपने ही बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं दे वोंट you know that it will be honest, it will be truthful. For example, हमने जो साउथ पंजाब में अभी जितनी इंटरवेंशन की है लाइक आई मेंशन वो ऐसी जगहों पे हुई है जिनसे दूर दूर तक सड़कें कनेक्टेड नहीं है तो वहां तक रिलीफ नहीं मिल रही थी वो लोग बैठे हुए थे 2 महीने हो गए थे एंड आई ऑनेस्टली डोंट नो हाउ दे बीन सर्वाइविंग as far as medical camps go, the government's done a great job. Like I think every 20 kilometers, there are 24/7 medical camps that are already existing. So for a private organization to do it personally right now, I think it would be counterproductive. टेक्नोलॉजी इस तरह भी इस्तेमाल हो रही है कि इनिशियली अगर मुझे कहीं जाना होता तो या तो मैं गाड़ी में बैठ के जाऊँ अगर हाईवे चल रहे हैं तो जहाज में बैठ के आप साउथ पंजाब पहुंच जाए रहीम यार खान डीजी खान मुल्तान और वहां से फिर आप गाड़ी रेंट करके आप सैलाब जाए या फिर आप बलोचिस्तान की तरफ जाए मगर हर जगह जहाँ लॉजिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है यू कैन यूज व्हाट्सएप फॉर पिक्टोरल सर्वेज यू कैन यूज देम फॉर गेटिंग द प्रोफॉर्मर्स एंड एवरीथिंग इज ऑन अ लाइव बेसिस जो आपको मिल रहा है और जहाँ रही बात जिस तरह तला ने कहा कि लोग घर गिराते भी हैं अक्सर ये 2010 में भी इस्तेमाल किया था और अब तो टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा बेहतर हो गई जहाँ फॉर एग्जाम्पल गूगल अर्थ हैज डेटेड मैप्स किसी के ओके जून 2022 के अंदर ये सारे घर थे जो इस बस्ती के अंदर थे और जुलाई 2022 में इतने घर रह गए थे और जब पानी गया तो इतने घर थे so that gives you at least a structural survey for when rebuilding comes कि ठीक है नहीं आपका सिर्फ एक कमरा गिरा था आपको 5 कमरे and stuff like that. Right. Acha, then before we wrap, there was this one thing that you mentioned a while ago, you are able to provide people guidance with donations kidhar bhejni hai. Now, obviously, because Pakistanis have had a great experience पिछले 75 साल से with our various governments, there was a lot of talk कि भाई government को तो हमने देनी नहीं है donation. हम individual charities को दे देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे. The flip side is कि perhaps the government, trustworthy or not, is the one with the most reach, the one with the most national level resources. So beshak, your heart is in the right place. I don't trust them, I'm going to give my money to somebody I trust, but that trustworthy person might not have that same level of access. So if people are looking, because surprisingly अभी भी लोग आ रहे हैं जो कि पूछ रहे हैं कि हम कहाँ पैसे डोनेट करें मतलब 2 महीने हो गए हैं सबको लेकिन मासूम लोग हैं still on the internet. What would you say people need to look for when considering where they should donate? Should people be making choices between organizations कि कौन क्या offer कर रहा है कौन कहाँ से what are the things that people should be mindful of? Can I take this? Yeah. I believe देखिए थोड़ा सा जो है ना सेल्फ इन्फॉर्म्ड होना चाहिए डोनर को सिर्फ मीडिया के ऊपर भरोसा ना करें ऐसा ना करें कि मीडिया वही वाली बात है मीडिया पे न्यूज नहीं आ रही तो कुछ नहीं हो रहा इनकी बहुत डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत अपडेटेड होते हैं एक वेबसाइट है reliefweb.int Relief Web International. It's a consortium product from multiple organizations as well as the UN. Okay. They have updated reports on every relief effort that is happening and every disaster that is happening around the world country-wise. Right. And आप हिस्टोरिकली भी जाएंगे तो 2005 का ज़लज़ला भी मिल जाएगा वहाँ पे आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने थे क्या रिलीफ हुई किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया इसी तरह 2022 में भी देर एक्टिवली गिविंग नंबर्स आउट देयर फिर आप ये देखें कि आपने आपकी डोनेशन से आप चाहते क्या किसी को खाना खिलाना चाहते हैं किसी को कपड़ा देना चाहते हैं किसी को शेल्टर देना चाहते हैं किसी को मेडिकल एड देना चाहते हैं कहीं रीबिल्डिंग right and narrow down what organizations are focusing on these different areas and then see कि उसमें से आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को आपको लगता है कि यार ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसको देना चाहिए तो my donation will be directly translated into relief effort. सही with regards to ये वाली बात जो की थी ना कि कौन कोई कपड़े दे रहा है मेडिसिन दे रहा है घर दे रहा है खाना दे रहा है is there a point where you should not be concerned कि भाई ज़रूरत तो हर चीज़ की है तो आप कहीं भी दे दें it's going to be useful because there's also the thing of aid being surplus to need या मतलब अभी इस बात की तो आपने जो चीज़ चाहिए नहीं थी आपने भेज दी a lot of discussion around sanitary pads not being used और वो urban people भेजे जा रहे हैं people are like bro गाँव में तो कोई यूज़ ही नहीं करता ये सब ज़ाया हैं तो
should people be thinking about these things या अभी हालात इतने खराब हैं कि कुछ भी भेज दो जरूरत पड़ जाएगी? नहीं सर, सोचना तो चाहिए। सॉरी, मैं फिर कटिंग यू। 2010 में एक से 1.25 करोड़ रुपए के कंटेनर आए थे, 2 अमेरिका से पाकिस्तानियों ने भेजे थे विद क्लियर इंटेंशंस, लेकिन उसके अंदर कैमल बैग्स थे, Right. यू नो मार्क्स एंड स्पेंसर की टी-शर्ट्स थी, Yeah. and you name the brand and the stuff was there. Protein bars the, energy bars the, protein drinks the. Yeah. These people don't know how to use this stuff. Yeah. फिर हमें ये करना पड़ा, जहाँ पे लैंड हुआ था उन लोगों ने ये किया, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, कि उन्होंने ये सब जाके मार्केट में बेचा, हाँ. होलसेल मार्केट में शेयरों की, और उस कैश से फिर राशन, कपड़ा, Relevant चीजें. दवा, चीजें लेके दी। सो Yeah. आपको बहुत जो बात है ना कि इंसान को जरूरत किस चीज की है, वो तो आपको हमेशा रखनी है वो ज़हन में। Right. Okay. और अदरवाइज वो आपकी भी एफर्ट जाया है और वो चीज भी जाया हो। मिसाल के तौर पे मॉस्पल बेचना, अगर किसी ने जिंदगी में मॉस्पल इस्तेमाल नहीं किया, हम शहर में करते होंगे, उन लोगों के किसी फायदे का नहीं है। 4 महीने में पानी खड़ा हुआ है, इतना मच्छर है, कितना मॉस्पेल भेज देंगे? पानी में मॉस्पेल डाल दो, like attack it at the source. आप बताएं। Censored. Moving forward, I'd also say that the reason I wanted to discuss technology and stuff like that is कि जब 2005 का ज़लज़ला आया था, मिसाल के तौर पर, ठीक है, एड पहाड़ों के हिसाब से गई थी। जब मैं ऊपर गई टुवर्ड्स केपी के, तो अराउंड लाइक जो कॉर्नर्स थे ना सड़कों के, वाइंडिंग रोड्स के, वहां भी पहाड़ थे कपड़ों के, क्योंकि लोगों ने without discrimination हर चीज भेजी थी। तो अगर का mini skirt है, and even in the 2015 earthquake we took about over a ton of winter clothes with us. वहां से भी like some of the stuff that came out, we had a great time filtering it, because there were mini skirts, there was all kinds of stuff. So ये भी देखना कि किसी के फायदे का है, or am I wasting precious money on logistics to take this up into this area? Which could be used for something relevant. Yes. So honestly, the best thing that you can do is cash, because it's boosting the local economy, it's putting money in the hands of people who have been impacted, especially अगर हम जाके किसी सैलाब के इलाके के करीब छोटे शहर से खरीद रहे हैं, तो वहाँ जो इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट हुई बनिस्बत यहाँ किसी गोदाम से खरीदने से, उससे भी फर्क पड़ता है। Right. जाएगा, ये लोग उन्हीं पैसों से फिर जाकर बीज बोएंगे, एंड देन आपकी नेक्स्ट, because abhi filhal, keeping in mind that for the next year or so there's going to be insane inflation on the fact that our fresh food items will all be imported. टमाटर, प्याज, आलू, हर चीज। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैश। जिंदगी चलाने के लिए ये दाल चावल वगैरह सब खत्म हो जाता है, लेकिन फिर हमारे इशू ये होता है कि जब कैश बढ़ना शुरू होता है तो लोगों के कान भी खड़े होते हैं, लोग कहते हैं कि सही नहीं बटेगा, जिसको मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, सारी ये बातें हैं। एक तरीका होता है आप डिजास्टर एम्प्लॉयमेंट भी एक चीज होती है। जो इफेक्ट कम्युनिटी है वहीं से आप लोगों को उठाइए, उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ताकि दे हैव दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए, ये ना सोचें कि आप अपनी मदद कर रहे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन these are unprecedented times, and उनकी रोजगार भी खत्म हो गया है। At the end of the day, they need money to run their household, no matter what, or even keep their dignity. So the concept of hiring people from the disaster-stricken community, I think, should be promoted. And also important, a lot of people feel कि अच्छा, we don't know who to trust, तो सारा जो पैसा directly उन villagers को जाकर देते हैं, that also is very counterproductive, because it's inculcating the handout. Yes, the handout culture. जो वो that can also, like, at the end of the day, आप उनकी self respect को मद्देनजर नहीं रखते, and that in the long term does impact their healing as well. So give it to an organization, and again, आपने खाना खिलाना है, आप खुद देखें, अभी तक ज्यादातर मुल्क को खाना मिल चुका है तकरीबन। क्या करना है, जहाँ इतने मच्छर हैं, आपने बीमारियों पे काम करना है, आपने स्प्रे करना है, या स्प्रे नहीं कर सकते, flowing water cannot be नहीं, flowing water भी नहीं, आप इतने 100 माइल width का एक exactly क्या स्प्रे करेंगे? अच्छा, there's a whole other conversation. Just letting you know, right? But yeah, how can you use technology? How can you use infrastructure? How can you use the people who are actually working? I know your question was more about specifics,
as far as specifics को अगर मैंने अभी 4 नाम ले लिए तो तला बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप जाकर पैसे दे देंगे, कल अगर खुदा ना खास्ता किसी ने कुछ गलत किया आप आकर हमें ही बोल रहे होंगे कि No, that's fine. No, that's okay. But I think I got what I wanted. Where the thing was, but instead of an individual just sending stuff, it's better that they give money to organizations who are working on ground. जो कि आपको थोड़ी सी research करके पता चल जाएगा. There's so many, and then that money can be used to provide relevant support area के हिसाब से. Sharmeen, there's a whole other conversation that we perhaps could have had or might have around the mental health impacts of people affected by all of this. Maybe at some point. You can come back for that. Yeah. Any. I think that's good. Is there anything else that you guys wanted to talk about? Add one. Just like to add that while resetting the industry, we'll be working in rebuilding over the next few months, and we are fundraising for that. The reason we were not as active on ground, this time is because our organization has for a couple of years been dormant. Acha. This is actually very it's a very cool fact that हमारे स्कूल चल रहे थे, स्कूल के अलावा हमारे ऑन ग्राउंड इमरजेंसी डिजास्टर एक्टिविटीज डोरमेंट थी क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी. जरूरत इस पड़ी कि कोई मेजर डिजास्टर नहीं आया पिछले 5-10 सालों में. जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारी सरकारी सिस्टम जो है ना, NDMA has actually matured. In 2005 or 2010, it was an infant organization, and over time it has actually matured and it has a really good system in place. Okay. And government is doing something. I think you're also giving a lot of credit. आज ही मैंने एक audio call सुनी. So let me finish what I'm saying, and then I would like your opinion. Yeah. So we weren't needed, which is why we weren't there. Right. Scale के customer, the NDMA themselves is recommending areas. If you speak to them, they're saying कि इस area में हमारे पास infrastructure नहीं, इस area में नहीं है, please take over. Right. So, the thing is, because this scale is not something that anyone's prepared for. You can't even employ someone for 365 days for something of this scale that comes once a decade. Yeah. So now it's all hands on deck, which is why they're also working with other organizations and encouraging other organizations to come up. I just want to add that because I feel that on a smaller scale, the government is doing a good job, and it needs to be said over here. Because I feel there's a difference between state and government, which is completely different. Sure. Nuance, जी तला. Nuance में नहीं जाए तो बेहतर है. Sitting Lieutenant General heads the NDMA, so it's not government. Yeah. देखिए, I believe 2015 में अगर मैं आपको बताऊं ना शमीन, 3 फीट डीप बर्फ में अगर आप कैनवस का NDMA का लोगो लगा हुआ टेंट दे रहे हैं ना, so you're wasting the country's resources. At the same time, you're creating a mockery out of the victims over there. Between 15 and 22. What I'm trying to say is that I understand that this is a disaster. The disaster is an emergency is converted into a disaster when the government of that nation, geographic area, cannot handle the response and has asked for foreign aid. So it's converted into a disaster category. I agree on that, but at the same time, देखें, I would say कि काम पहले से तो बहुत बेहतर कर रहा है इंडिया. जैसे मैं आपको बताया था, एक ऑडियो नोट में अभी सुन रहा था, एक डिजिटल मीडिया चैनल है, उन्होंने लगाया है, दादू से एक साहब ने कॉल की NDMA को. उन्होंने बोला जी मैं 26 दिन से कॉल कर रहा हूँ रोजाना, और मैं इस तहसील से बात कर रहा हूँ और मेरे गांव का नाम ये है और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है. तो उन्होंने बोला जी मैं आपकी कंप्लेन लिख देता हूँ, हम आपके पास आते हैं. NDMA से आगे से जवाब आया. उन्होंने बोला जी मेरी कंप्लेन कोई नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जी हमारे इलाके में बम गिरा दें, हमारी जान छूट जाए. ये भी है, ये फैक्ट है ग्राउंड पे. तो देखिए, बात सारी ये है कि हम यहाँ से बैठ के बुरा भी कह सकते हैं, किसी को अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन जिसका जूता काट रहा है ना, उसको कितनी तकलीफ होगी. Sure. हमारे अंदर एम्पैथी नहीं आएगी, we won't be able to come out of this disaster or would be ready for any other disaster in the future. I agree with what you're saying, and I do agree that maybe we are not addressing everyone's needs as a nation. But यहाँ I think शायद कोई एक mental health and distress का भी हुआ है. अगर कोई कह रहा है कि बम गिरा दो,
definitely. that Definitely. conversation is completely different. जब Abbas time आता था, for example, right? हम वहाँ basics like water, hygiene items ऐसी चीजें दे रहे थे, सर्विस कर रहे थे और एक medical camp लगा रहा था. मेन रोड के ऊपर मीडिया वाले थे जो राशन मीडिया वाले थे और वहाँ राशन के लगे थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के. वहाँ एक बंदा था जो टीवी के सामने शोर मचा रहा था, मुझे कुछ नहीं मिला. Right. 15th year, he had been at our medical camp. 3 different doctors had seen him. He had received everything over the period of the 4 days that we had been there. Right. But he was so distressed. He Right. was actually genuinely distressed. It wasn't that he was making it up, but he felt that nobody cared about him. Right. And he went to television and he said, "Yahan koi kuch nahi kar raha, sirf dikhawe ke liye aaye hain." And honestly, it was a very long time ago. I got pissed off when I heard that. Because maybe it was empathy that got me there, but it was not enough to like hello आप ये क्यों कह रहे हैं, मैंने directly आपसे बात की है. So it felt like मैं शायद कुछ कम करी. हम भी कभी कभार ego से काम लेते हैं. So I mean, it's hard to really understand what somebody is living through if you're not living through it. So there's always going to be थोड़ा सा gap तो होगा, आप बेशक जितनी भी कोशिश कर लें. And I suppose the lesson is to keep the bigger picture in mind and not let इस तरह के hurdles, क्योंकि hurdles तो बहुत होंगे. It's not. Second, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं. अगर हम सारी इंसानियत का बोझ अपने ऊपर लेंगे तो ना हम किसी और की मदद कर सकते हैं, ना ही हम अपनी मदद कर सकते हैं. So one person at a time, one day at a time, if we can even impact one life, we've done something right. Achha, it might be too early to ask, but given the way climate change has been going and given how there can be sudden accelerations in things getting worse, might be too early to ask. But इस साल जो हुआ है और जो relief efforts हुए हैं and the stuff that people have had to come up with, do you think that is putting us in a better position for future disasters, or is it perhaps too early to say? It's an opportunity to rebuild if we take that opportunity. Okay. If like in the past, if we ignore it, we'll ignore it. Right. And we'll be in the same place in the future as well. I agree. Chalo. Okay. Anything else? No. Okay. Would you want people to find you on the internet? Yeah, that's always nice. Yeah. Not always. Not always. But chalo, I'll put your Twitters in the bio. Okay. Whatever you want. मुझे बता देना जो भी डालना है. And we can put that in. चलें. Sharmeen, Talha, thank you very much for coming. I think you might be back at some point. Because I don't think this problem is going to go away quickly enough for us to not talk again. And if you ever want to talk about something else, अब तो आप आ गए तो आप फंस गए. You can come back whenever. ठीक है जी. Thanks very much for watching, everyone. We'll stop recording here and we'll see you next week.